अभी राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है। ही इज होल्डिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। राहुल गांधी ने एक शब्द भी भूपेन हजारिका जी का बारे में नहीं लिखा। ये अत्यंत खेद का बात है। बाकी वो हाइड्रोजन बम में लेके न्यूक्लियर लेके हमारा कुछ फर्क पड़ने वाला उसमें नहीं है। वो एक कार्टून है, कार्टून ही बना रहेगा। देखिए, कल पूरा असम प्रदेश ने भूपेन हजारिका का बर्थ सेंटिनरी ऑब्जर्व किया। प्रधानमंत्री जी ने इनका ऊपर लेख भी लिखा। गृह मंत्री अमित शाह जी से लेकर हमारे पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा तक सबों ने भूपेन हजारिका का जो कंट्रीब्यूशन है, इस कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज भी किया, याद भी किया। लेकिन अभी राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है। ही इज होल्डिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। राहुल गांधी ने एक शब्द भी भूपेन हजारिका जी का बारे में नहीं लिखा। ये अत्यंत खेद का बात है। सारे लोगों ने कुछ ना कुछ लिखे, लेकिन राहुल गांधी बीइंग द लीडर ऑफ अपोजिशन, राहुल गांधीয়ে এটা শব্দ ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত যোৱাকালি নিলিখিলে আৰু ভূপেন হাজৰিকাক স্মৰণো নকৰিলে। যদি ৰাহুল গান্ধী এমপি এজন হলতেন মই এই বিষয়ে উল্লেখো নকৰিলোহেঁতেন। কিন্তু তেওঁ বিৰোধী দলপতি। ভূপেন হাজৰিকাক বিজেপিয়ে ৰুমন্থন কৰিব এনেকুৱা নহয়। তেওঁ নন পলিটিকেল আৰু তেওঁ সকলোৰে ভূপেন দা। राहुल गांधी बीइंग द विरोधी दलपति तेखेते भूपेन हजारिकाक स्मरण नकरातो अहोমৰ राइज अत्यंत दुखित और क्षोभित। गतिके मैं अहोমৰ राइजर फिलिंग्सটো আপোনালোকক কলো। बाकी वो हाइड्रोजन बम में लेके न्यूक्लियर लेके हमारा कुछ फर्क पड़ने वाला उसमें नहीं है। वो एक कार्टून है, कार्टून ही बना रहेगा। केइटात কৈছে চাওক, আমি কোৱাৰ পিছত 11টা বজাত ৰাতি 12:30 আৰু মল্লিকাৰ্জুন খাৰগে আৰু পিছত যেতিয়া আমি পইণ্ট আউট কৰিছো, এইটো যেতিয়া বিজেপিৰ সোশ্যাল মিডিয়াই তেওঁক এটেক কৰিছে তেতিয়া কৰিছে। আজি মই কলো কালি কৰি দিলেহেঁতেন, এইটোৰ কোনো মিনিং নাই। টাইমিংটো চাওক না। ৰাতিপুৱা মোদীজীয়ে কেইটা বজাত লিখিলে, এইটো 12:30 কেতিয়া আহিলে, যেতিয়া বিজেপিৰ পৰা সোশ্যাল মিডিয়াত এটেক কৰিলে তাৰ পিছত দিছে। গতিকে 12:30 এটা বাহি বিয়াত উৰুলি দিয়াটোৰ কি মিনিং আছে? সেইকাৰণে এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে দিয়া, আমাৰ কাৰণে দিয়া নিদিয়া একে কথা। বাহি বিয়া এখনত উৰুলি দি ৰাতিপুৱা 9টাত ভূপেন হাজৰিকা আমি শ্ৰদ্ধা জনালো, সকলো হৈ গল। 12:30 যেতিয়া বিজেপিৰ সোশ্যাল মিডিয়াত কালি এই প্ৰশ্নটো কৰা হল, তেতিয়া দৌৰাদৌৰিকৈ কোনোবাই টুইটটো অনুৱালে। সেইটোতো আৰু পোষ্ট ডেটেড চেক যে আহে তেনেকুৱা এটা কথা। যদি মৰম থাকেতো ৰাতিপুৱাই কৰিব নহয়। সেইকাৰণে এইটো আপোনালোকে টুইট বুলি কৈছে কাৰণ আপোনালোকে ৰাহুল গান্ধীক ভাল পাই কাৰণে উলিয়াইছে। যাৰ থাকিব এইটো ৰাতিপুৱা 8 বজাতে 8:30 বজাতে দিব। আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই প্ৰবন্ধ লিখিছে। তেওঁতো 12:30 বজাত যেতিয়া আমাৰ বিজেপি বিলাকে সোশ্যাল মিডিয়াত প্ৰশ্নটো তুলিলে, তেতিয়া কৰবাৰ পৰা অসমৰ পৰা ফোন গৈ যেনে তেনে এইটো মেনেজ কৰি আনিলে। সেইটোহে কথা।